properly. So please tell me in the chat if you are able to hear me, yes or no. So I think I am live and okay, so I can see only like 2-3 people here. 3 people who are talking to me. One is Chetan, other is Syed and Premoxy. So एक और बंदा या बंदी, I don't know, but yes, one more is like Premoxy that we have here. And I am looking forward to your chat, but yeah, hi, I can see you all right now. I can see you all right now. That is one thing. Okay, fine, okay. So hi, how are you all? So I hope that you all are able to hear me all properly, and right now I have got so many people who are like replying back to me. Happy evening, sir. Happy evening. Thanks a lot, every one of you, for joining in. And today's session is going to be like 1 hour session, which is going to be on object oriented programming. So let's not waste much of the time. Let's just get started with our today's class. Just get started with that. Okay, so I hope that you are able to hear me also properly, and we can take things ahead. Okay, so here is my screen, and this is our full PPT. आज का मूड अच्छा है ना? किसका? अरे मेरा कि नहीं? अच्छा, मेरा तो सब बढ़िया है, एकदम जोरदार. ठीक है, मेरा मूड तो बहुत सही है. सो तुम पे डिपेंड करता है यार. तुम लोग अगर आंसर दोगे तो बढ़िया रहेगा. अगर इफ़ यू गाइस आर नॉट आंसरिंग देन इट इज़ गोना बी नॉट सो गुड. सो दैट्स वन. And the second thing is, I can see that Nikhil, Dubey, Yusuf, Arjit, Chetan, hi Chetan, Anurag Sharma, Kavya, okay, fine. तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी की तरह बोले तो. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. अभी ये बताओ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स? ओके, सो लेट्स जस्ट कीप एवरीथिंग असाइड. एंड अब मुझे एक चीज़ बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स? मैं एक नया रिपल बना रहा हूँ. ठीक है, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू रिपल and OOP in C++, object oriented programming in C++. My sir, okay, hi sir, how are you sir? And फटाफट से बोलो यार. Just tell me that thing in the chat. What do you mean by object oriented programming in C++? So नहीं, the question was, what do you mean by classes in C++? Classes का मतलब क्या है C++ में? So let's get started. The number one thing is OOP. Like C++ के अंदर जो OOP है, OOP का मतलब होता है Object Oriented Programming. Okay. Now where do we use Object Oriented Programming in our life? We use Object Oriented Programming in our everyday life. Everything is an object, and everything that we see in our real life is also an object, and everything that we are interacting with. Let's say this is a mic. Mic is an object. Okay, I have got a small let's say a water bottle. Water bottle is a object. So everything in our life is an object. Okay, so when you want to process, okay, whenever you want to process object data in computer language, okay, कंप्यूटर को जब कमांड्स देना होता है, एक मिनट रुको ज़रा, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ये लाइट थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट हो रहा है. ठीक है, सो लेट मी जस्ट, ओके फाइन, ठीक है, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है. लाइट थोड़ा कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, एंड आई वाज लाइक चलेगा यार. हाँ ठीक है, नाउ आई थिंक थोड़ा आँखों पे ठीक है. ओके, सो नाउ
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर डू वी यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. जैसे मैंने बोला, ईच एंड एवरी थिंग इन आवर लाइफ इज एन ऑब्जेक्ट, and whenever you want to process object related data into your computer programming, that time you use objects. Okay, and C++ is the first programming language. Okay, C++ is the first programming language which has introduced object oriented programming. Now, what exactly is object oriented programming? Object oriented programming has few advantages over procedural programming and all, but please tell me in the chat right now, what do you mean by object oriented programming and procedural programming? Okay, so बताओ, फटाफट से बताओ. Okay, 100% I can send you the PPT after this class. I'll do send it. मुझे बताओ फटाफट से कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है. ओके, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. Okay, please tell me in the chat, every one of you, all of you guys, please just go ahead and bombard the chat फटाफट से. You have got 1 minute. It's 8:06. By 8:07 I need the answer. मैं आज तुमको ना object oriented programming, today I will explain and make you guys master of object oriented programming in C++. That is one simple promise I have. At least I'll enable you so much that you can go ahead and start learning so many concepts. Okay, object oriented programming. So please tell me in the chat. Object oriented programming consists of objects, that is okay. So what is the major difference between procedural programming and object oriented programming? It's very simple. Procedural programming, you have to give commands on a line by line manner, and your program will take all the commands one by one and it will execute. Okay, and it will give you the outputs based on that. But whenever you want to work with complex data types which contains a certain extra properties and all, and remembering certain objects or like certain thing, like for example I have got a camera. कैमरा के थोड़े प्रॉपर्टीज़ रिमेंबर करना पूरे प्रोग्रामिंग के अंदर और उसको एग्जीक्यूट करना वन बाय वन विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर कैमरा के प्रॉपर्टीज़ सेव करके उसके बारे में लिखना. ओके, सो उसके बारे में प्रोसेस करना. सो that is the major by default difference. The difference is procedural program can run the program, but everything should be step by step. तुम command दोगे वो execute करेगा. 10 command दिए, 10 command execute कर रहा है. But वही object oriented programming के अंदर, in object oriented programming, the C++ program can remember context of a particular object. Okay, I hope that I am clear. Okay, now I hope that you guys are clear. Now let's understand what are the advantages of object oriented programming. Okay, object oriented programming is faster and easier to execute. Object programming provides a clear structure for the programs. Oops or like oop helps to keep the C++ code dry, don't repeat yourself, and makes the code easier to maintain, modify, debug. These are like okay features. But one of the major feature that I want to tell you all is object oriented programming makes your full application code reusable. Okay, and reusable application with less code and shorter development time. क्योंकि कोड नहीं क्या रीयूजेबल होता है. दैट इज़ द रीज़न वाई. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट वन मोर टाइम.
it supports polymorphism, it supports inheritance, it supports few other properties here and there. I may not be able to like do all these things, but yeah, so I'll 100% enable you to understand what is the basic of object oriented programming. If you guys request me ki sir please teach us inheritance also, please teach us few other things, I will teach you guys, don't worry about it. Okay, so वो मैं पढ़ाऊँगा, आप समझो, टेंशन मत लो उसका, ठीक है. Now seeing your chat, I can see that few people have answered certain questions which I was asking. And जैसे top down in POP and bottom up in OOP. Yes, you are right. POP के अंदर क्या होता, लाइक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर ऊपर से नीचे एक लाइन एग्जीक्यूट करते आता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बॉटम टू अप जाता है. दैट मीन्स इट बिल्ड्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स and it will execute at once, but that is not a very big advantage and all, that is just a small difference. But one of the major differences is object oriented programming remembers context, and that context is missing in procedural programming. Okay, so I'm talking too deep, I don't know if you guys are able to understand it, yes or no. Okay, so now for doing object oriented programming in C++, to achieve object oriented programming in C++, we have got something known as classes and objects. Okay, classes are like a template, okay, are like a template that you use to create various instances of a particular class. Those are known as objects. So class is a one particular template. Using this template you can create lot of objects. Okay, lot of objects. I hope you get the point. Using one class template you can create multiple objects. Are you guys clear about it? Are you guys clear about it? So please tell me in the chat if you guys are clear about it. Using one particular class, you can create multiple objects. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? नहीं आ रहा तो सीधा सीधा बताओ, ठीक है? अगर आ रहा है तो बताओ. What is that? Where are you? Are you guys able to understand it? Yes or no? Okay. So now I can see that I am getting answers like yes, yes, easy to. I'm just getting two. I have got two answers till now. I don't know why. Yes, fine. Okay. Now, classes and objects are two main aspects of object-oriented programming. For example, class is a fruit. Objects are like apple, banana, mango. Okay. Class is a car. C-A-R, car. Objects are like. Like tell me all the good car names. Okay. Mahindra 700 like 700, XUV 700. Then uske baad we have also got Scorpio. Then we have got Tata, Nexon, Safari, Harrier. So these are few my favorite cars. So you guys please tell me in the chat which all are your favorite cars. Someone has mentioned Swift, BMW ka, okay, M3, and Mercedes Benz, BMW Jeep, BMW Ferrari, Nano, yes, Nano, Tesla. Wow. So whenever you're working with certain objects, let's say आपका जो program है, एक computer program है, if it is working with fruits, मतलब उस program के अंदर आपको fruits का data process करना है, that time you will use class that is fruit, and you will create all the details in it and you will use it like this. That is one. So a class is a template for objects, and an object is an instance of a class. Okay, I hope that is clear. When the individual objects are created, they inherit all the variables and functions from a class. So एक class के अंदर ना specific variables होते हैं, basically properties, and specific functions होते हैं, basic processes. Okay, functions are processes you can, with the help of that data, what all we can do. That is a simple function. So in a class you have got
data types and functions. Both can be both will be inherited to a particular object. जैसे fruit है, fruit class के अंदर name है, then what is the which vitamin is there in this particular fruit, you want to store that, so that will be also carried for the banana wala object. It will also be carried for mango object. It will also be carried for apple object. I hope that you guys are clear. Thar, Mustang, Dodge, SRT, Challenger. Wow. Dodge Viper is also one good car. And Ford Mustang is the all time Geo 80. Greatest of all time, right? Yehi hai na? Greatest of all time. Now, Ambassador is also one of the very good cars that India had. एंड रोल्स रॉयल्स. वाह, तुम लोगों की कार के चॉइसेस तो यार ऐसे अमीरों वाले कार के चॉइसेस हैं. वाह, गुड, नाइस. फटाफट से कमाना स्टार्ट करो यार, एंड मेरे को लेके घुमाओ कार्स के अंदर, मेरे को बड़ा मज़ा आएगा ना. क्लासेस के अंदर चलो ठीक है, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अ बेसिक कोड, देन वी विल गो वन स्टेप अहेड. ओके, क्लास बनाते हैं पहले, then उसके बाद we will take it to one step. Okay, fine, clear. I hope you guys are clear about it. In terms of coding, my slides are not so good, so I will be using this thing that is basically W3 schools. You know, I use W3 schools for my lot of content before I teach. So yeah, everything in C++ is associated with an object along in C++. Okay, कार का तो ये दे ही रहा है, ठीक है. So now let's just go and create one particular simple class. Okay, एक छोटा सा class item बनाएंगे, and once we have that class item, then we will go ahead and start building it. So I'll just open our previous Replit. Okay, जो अपन ने पहले बनाया था, ठीक है, वो Replit उसी के अंदर लिखे कि नया वाला बनाया, दिखते हैं, ठीक है. ओके यार, दिस इज अ वेरी बिग कोड, राइट? इट्स अ वेरी बिग कोड दैट वी हैव रिटन. व्हाट डू यू सजेस्ट? शुड आई क्रिएट अ न्यू वन और शुड आई राइट इट हियर इटसेल्फ इन दिस बाय कमेंटिंग ऑल द अदर स्टफ? कमेंट करके लिखते जाऊँ कि नया वाला बनाऊँ? ठीक है, लेट्स जस्ट डू हियर इटसेल्फ. एक काम करते, नया वाले में बना देते हैं, ठीक है. I hope that is good. Create new. Okay, as you guys are saying, I'll just go ahead and create new this thing instead of this. I hope you all have the link of this. Okay, आपके मैं link दे देता हूँ, ठीक है. So that's one. Fine. By the way, let's refresh and mark our attendance here. In the chat, you are in the description, you will be able to see a particular links. Okay, you will be able to see these all links. Just go there. Okay, registration, attendance, assignments, LU coin, certificate, सब कुछ लिखा है ना. So यहाँ पे attendance के लिए link पे click करो. This will open up. Okay, this will open up and you guys can give your attendance and all. Okay, so मैंने अपना attendance mark कर दिया, तुम भी mark करो. जैसे ही मार्क करते हो व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, सो वो मैसेज के अंदर ना येस और नो करके कुछ एक रहेगा अंदर, ठीक है. सो एज सुन एज यू डू दिस थिंग, आर यू इंटरेस्टेड इन 6 months PGP like full stack program, yes or no? So just go ahead and appropriately answer. Okay, clear? I hope that you are clear about it. So let's just go ahead. Why I'm not able to see your chat? And it would be better if you try to solve the problem by looking up error code in troubleshooting. क्या है भाई, क्या हुआ? कहाँ पे error आ रहा है? Where are you guys seeing an error? I am not able to understand. Please tell me. Just give me थोड़ा सा इधर
सर सी प्लस प्लस यूज़ करके ऐप बनाया जा सकता है? सी यू कैन क्रिएट सर्वर्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स विद द हेल्प ऑफ C++. You can also create database connections and write C++ code as a backend. That is one of the most optimized backends that you will be having in this entire earth if you create. But people generally don't use it because at certain point of time it becomes thoda sa complicated for people to use. That's where you can use for web development and for web app I will suggest Stack. For Android or iOS you have to create a Flutter. Okay, you use Flutter or React Native, whichever one you like. That is one. And second thing, most of the backend, like very efficient backend codes are written with the help of C++. For example, if you are a game developer, okay, and you want to build certain game, like let's say you want to build a game where already the graphics are very much require, like very heavy power, like very memory consuming. So you don't want to spend a lot of memory for you know what, you don't want to spend a lot of memory for ऐसे ही time waste करने के लिए, like ऐसे ही नहीं क्या memory use नहीं करोगे. That time you want to use something like C++, which is very much memory oriented and memory के पास में, और साथ ही साथ ना it's very device oriented. Okay, so hardware oriented in short. That's where you use C++. But app and all, you're okay using other languages, which will give you a lot of speed in developing it. Okay. So I just hope I have answered your question. And okay. So now let's just get started with our current class building stuff. So this is our basic C++ class. So what we have to do is we have to just build one small object first. And in this class they have named it my class. यहाँ public and all क्या है? Public, private, protected. These are the three different access specifier. So what do you mean by access specifier? We will understand that also. And here you are seeing one basic attribute is there. Okay, integer attribute. So we'll just go create it. Okay. Class car. Okay. Now I want to by default I want to use int. एक मिनट है, इसको थोड़ा सजा लेते हैं आजू बाजू. int छोड़ो, या फिर int लिखो ना, int model. int model. Then उसके बाद I want to use something like name, right? Name के लिए string name. Okay. And what all brand is equal to, oh sorry, brand भी string में जाएगा ना, string brand, right? So these are the three things. I will use public as access specifier. Now what is, there are three different access specifiers, right? Public, PRIVA, private, protected. So what do you mean by public, private and protected? So please tell me in the chat. Okay, that's a quick googling वाला session for you. तो ये आपने बना लिया एक छोटा सा class. Okay, so this is a small class that you have created. Okay, so is it clear? Is it clear? We have not done any rocket science. अपन ने कुछ भी नहीं किया अभी तक, कुछ भी नहीं बनाया अभी तक. ठीक है, अपने बहुत 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 ऐसा छोटा सा चीज़ किया है. ठीक है, but we have done it. Okay. By default the data is private. By default the data is private. If you don't write anything here, it will be private. इसका मतलब क्या है मुझे वो बता. What do you mean by access specifier? So there is something known as access specifier. Public keyword के साथ तो है. हाँ. So see this. Public मतलब members are accessible from outside the class. Private के अंदर member cannot be accessed or viewed from outside the class. Members cannot be accessed from outside the class. However, they can be accessed in inherited classes. So protected और private के अंदर तो मैं खुद fight करता था बहुत बार. ठीक है, but
the point is कि you have to give me a better explanation what do you mean by public, private and protected. Okay, public, private और protected के बीच का नहीं क्या difference मुझे बताओ फटाफट से. ठीक है, so I hope this part is clear to every one of you. सब public का ऑल ओवर क्लास एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी, लेकिन प्राइवेट को नहीं कर सकते. प्रोटेक्टेड इज काइंड ऑफ प्राइवेट बट कैन नॉट बी इनहेरिटेड. कैन नॉट बी, कैन बी. एक बार देखो ज़रा, पढ़ के देखो वापस से. ठीक है, सो ना वी हैव जस्ट मेड अ स्मॉल क्लास. अपन ने C++ के अंदर एक छोटा सा क्लास बनाया. जैसे अपन इंट वगैरह कॉल करते हैं ना, लाइक हाउ वी कॉल इंट एंड ऑल, लाइक यू कैन कॉल राइट नाउ कार. कार इज अ ऑब्जेक्ट. Okay, sorry, car is a class. Car is a class which can be used to create my car. Okay, ऐसे my car 2. Okay, my car 1, my car 2. ठीक है, my car 1, my car 2 हो गया. Now my car 1 dot. Okay, मॉडल डाल देता हूँ. मॉडल इज इक्वल टू, भाई देखो, माई कार इज 2022 मॉडल. 2 नहीं यार, 21 मॉडल. माई कार 1 डॉट ब्रांड, राइट, सॉरी C कैपिटल है ना, ब्रांड इक्वल टू निसान. मेरे पास निसान की मैग्नाइट है अभी फ़िलहाल में यहाँ पे. ब्रांड, सॉरी ब्रांड नहीं है, ब्रांड तो हो गया ना. व्हाट एल्स इज देयर, नेम. ओश, हाँ, बट यू नो व्हाट, आई थिंक मैग्नाइट. ठीक है, आई जस्ट गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल. नाउ यू डू सी आउट एंडल. एंडल की जगह पे यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो, हैशलाइन न्यू \n. ओके, साहिल अली इज आस्किंग इन C क्लासेस आर नोन एज स्ट्रक्चर्स. ऐसा नहीं है साहिल, स्ट्रक्चर्स आर टोटली हाँ, स्ट्रक्चर्स के जैसा ही क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स है. Structures are basic advanced data types that you can create and all. You are right, kind of, but 10% only. 10 not, I think I say 20-25% right. Based on that only, they have added a few other properties like polymorphism, inheritance, function, methods. They have added these all things, and they have said it, okay, C and C++, this is the difference. I hope that you have got it. Let's just go ahead, okay, and car 1 equal to my car 1. Let's see what will be printed. I think it will not be printing anything यार. सही है ना ये तो, my car 1 dot name. Okay, so ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रिंट नहीं होता उसका, उसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, प्रिंट ऑल द कार करके, फिर एंटायर कार. सो आई एम जस्ट रनिंग दिस. सो लेट्स सी. मैग्नेट के बाद हेलो वर्ल्ड. अच्छा, ठीक है. सो आई होप दैट यू गाइज आर क्लियर अबाउट दिस थिंग कि हाँ चलो मैग्नेट आया कार 1. अभी सेम इसी तरीके से माई कार 2 डॉट मॉडल इक्वल टू, नाउ यू गिव मी 2022 का कोई कार. नाउ यू सजेस्ट मी वन कार इन द चैट गाइस, फटाफट. ब्रांड क्या कुछ आया क्या? नो. महिंद्रा थार, THAR थार. ओके, माई कार 2 डॉट ब्रांड इज नॉट थार यार, इट्स महिंद्रा डॉट नेम
equal to, what's that thing? Thar. I also like Thar. Okay, run. यार BMW बेंटली ऐसा दे रहे हो ना, कुछ तो हो गया. हाँ यार, कार 2 है ना इधर. आजा भाई. हाँ ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन. ओके, इट्स वर्किंग. THAR थार. ठीक है, सो दिस थिंग इज टोटली वर्किंग. ओके, नाउ सर के पास तो थार भी है. नहीं, मेरे पास थार नहीं है भाई. मुझे अभी तक तो नहीं है. ठीक है, इफ़ यू गाइज मेक मी इनफ फेमस देन 100% आई बाई एंड मैं तो सबको फ्री का ऐसा राइड बांटता रहूँगा. ठीक है, नाउ इंस्टेड ऑफ ये, चलो हो गई बात. ठीक है, नाउ यू गाइज नो. ओके, चलो ठीक है, वी कैन स्टोर ऑल एट्रीब्यूट्स इन अ ग्रुप. ओके, वी कैन हैव ऑल द एट्रीब्यूट्स इन अ ग्रुप. दैट इज क्लियर. अभी इसके आगे ना थोड़ा एक आगे जाते हैं. ठीक है, 1 स्टेप अहेड. ये तो चलो एट्रीब्यूट एंड ऑल हो गया. क्लासेस एंड मेथड. ठीक है, सो मेथड्स आर फंक्शंस. मेथड्स का मतलब कुछ नहीं है, बस वो फंक्शंस है विच बिलोंग टू अ क्लास. मेरे पास भी है यार, पीपीटी के अंदर मैंने भी लिखा है बहुत सारा कुछ. ठीक है, क्लास मेथड्स आर फंक्शंस दैट बिलोंग टू क्लास. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस. Inside class, there are 2 ways to define a class. Inside a particular, there are 2 ways to define a method in a class. One is inside class definition, other one is outside class definition. 2 तरीके से आपने क्या functions का definition कर सकते हो. In the following example, चलो ठीक है, अभी we'll create one simple class. Void print details. ठीक है, print details. अब इसके अंदर ना I'll just get all these things. Like I'll show you one example, then I'll do it. Okay, then I'll do it. So public वाला जो access specifier है, उसके अंदर ही ना you are just creating one method. Okay, particular method, and you are writing down hello world, whatever you want to write. In our case, I will write down our variables. Okay, I want to write down our variables. So I hope that I'll just go ahead and I'll start writing this, ताकि तुम लोगों को सब, I hope that you are understanding whatever I'm teaching. Name, ठीक है, ये रहा नेम. उसके बाद मॉडल, ब्रांड. आई थिंक ब्रांड सबसे ऊपर आएगा ना. ठीक है, ब्रांड नेम. ठीक है, डन है. हाँ सही है चेतन शाह ब्रो. GTR निसान GTR 590. वाह, ठीक है, अगर तुम सब लोग आ गए. नाइस यार, यू गाइज आर लाइक नॉलेजेबल पीपल इन कार्स ऑल्सो. ठीक है, सो आई हैव गॉट, सो इंस्टेड ऑफ माई, अभी मैंने क्या इसको रन करता हूँ. ठीक है, everything is running fine. I have got one simple function method. This method is to print all the details of a particular car. So what I'll do is instead of my car name, I'll be like print details. ठीक है, instead of मुझे ये सब सी आउट की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सिंपल है, ये आ गया पूरा. car print details. Okay, so I'll just go ahead, I'll run this. So both the cars detail are printing. So 1 2 3 4 5 6, so 1 and 2. Okay, I hope this is clear. Sorted.
Done? Okay, clear? क्लियर है कि नहीं? बताओ, फटाफट बताओ यार. In the chat, please tell me. So, you not only created your own object type, okay, you not only created your own object type which can save certain attributes for a particular car object, but it can also append the data in a form of a method. When I say append, or like you can retrieve it, you can access that data with the help of a method. Okay, so in a collection, like you can manipulate the data in whichever format you want to. Okay, so for example, अभी ना मुझे कुछ और करना है. ठीक है, क्या करना है बताऊँ? मुझे ना अभी I want to set the set name. I want to do this. Sure. Set name. अभी obviously name है तो string में आएगा name. So अभी name नहीं लिखता मैं, चलो मैं n डालता हूँ. Okay, name is equal to n. Simple. The same way I'll create one more function. Set model, set brand b. यहाँ पे भाई b ठीक है. मॉडल के टाइम में वो इंटीजर है, इंटीजर m, here m model. Okay, I hope this is clear. Model is integer, rest everything. So I have set this thing also. Clear? I'll just run this. Now you're seeing all the details like this. But if I want to, after setting certain details, I want to change my car1 dot set. जैसे महिंद्रा की थार है, इसमें m small है. I want to set brand. In set brand, I want to do one small change. MAH माही, मैं माही लिख देता हूँ. ठीक है. After writing माही, I want to again print car one का detail. Run this. Now what you will see? First, the car name was Mahindra. Oh shit, I updated the car one. Basically Nissan Magnite वाला का ना Nissan brand से उठा के मैं माही brand कर दिया. So maybe I'll just try something else. Okay, मैं second वाले पे try करता हूँ and second वाले को print करते हैं. ठीक है. So गलत हो जाएगा, ethically गलत कर रहा है कार इंडस्ट्री के साथ. ठीक है. So see, Nissan Magnite वाला सब तो ठीक है. Now brand Mahindra, name Thar, model 2022. I just wanted to change name. So what I did, I basically did set brand Mahi 2 के अंदर automatically brand Mahi हो गया यार. कितना awesome है, right? Don't you think so? It is good that what we are doing. So basically अपने एक छोटा सा methods के through अपन ने क्या किया? We have started playing with, okay, 4 methods are there. One method is to print all the details. Other method is to set each and individual details. Right? Clear? Sorted? Done? I hope you guys are clear. Now Mahi, when I say, everyone is like MSD. Wow, jersey number 7. Sexy, right? Nice. Chalo. Okay? So we are done with basic this thing also. That is what? Methods also. Clear है? हाँ या ना? क्या है बताओ यार. हाँ या ना? तुमने ज़िंदगी में एक फटाफट यार लेजिट 40 मिनट के अंदर तुम लोगों ने पूरा you have just created a good object, I think, in C++. You should be super proud of yourself. If you don't know C++ में objects, ये सेशन के बाद तुम्हें याद रह जाएगा C++. Okay, this is my guarantee. C++ में objects at least.
ठीक है. Now what I want to do, I want to do one small thing. Okay, I want to do one small thing, right? What is that small thing? I want to build a, जब भी मैं ऐसा my car नाम का my car, whenever I define my car, I want to define all these variables ASAP. Okay, मुझे ना फटाफट से इन सारे variables को define करना है. So what can I do? I can create one void set all details. ठीक है, एक मैं ये बना सकता हूँ, right? So in this I will take first model int अच्छा int m लेना पड़ेगा. देन उसके बाद string name लेना पड़ेगा, फिर string brand लेना पड़ेगा. देन name is equal to n, model is equal to m, सेम इसी तरीके से brand is equal to b. Clear? We have done this. Sorted it? Okay. So we have done this. Now, whenever you're defining my car 1, instead of doing this all jhamela, ये पूरा झमेला करने की जगह, what you can do, you can basically do one thing. My car 1 dot set all details. Okay, I have to send 2021. n में क्या था? नेम था निसान magnet. Okay, so instead of doing that whole big झमेला, बड़ा झमेला के अलावा, let's run. What will happen? Let's see. Oh, कुछ तो मिसिंग है. क्या मिसिंग है? चलो इसके तो डिटेल आ गए, बाजू वाले के डिटेल नहीं आए, और प्रिंट वाले के अंदर कुछ डिटेल नहीं आया. वो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिटेल्स थी वो आ गई. सो इंट के अंदर ना ये नंबर बाय डिफ़ॉल्ट था, सो इसलिए वो आ गया. एंड दैट्स वेयर यू आर सीइंग जंक डेटा, लाइक जंक डेटा. सो व्हाट वी विल डू, अपन लोग अभी जाएंगे एंड कार 2 का भी माई कार 2 डॉट सेट ऑल डिटेल्स 2022. क्या था? नेम ना, THAR थार. ओके, व्हाट इज दैट? महिंद्रा, राइट? महिंद्रा थार. रन. सो व्हाट यू विल सी नाउ, you are not garbage value, Medakar. Okay, so you are a very good student, so I hope that you're clear. So now yep, so see, ये तो हो गया भाई सेट डिटेल. विच वॉज गुड, वो पहले 3 लाइन लिखे वो अच्छे थे, या फिर ये 1 लाइन में काम हो रहा है ये अच्छा है. ओके, सो यू आर सीइंग दैट वी कैन सेव सो मच ऑफ टाइम. अपन बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं, राइट, बाय डूइंग सो मेनी थिंग्स. नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड what if whenever I am declaring a new car, my car, ये सेट एट्रीब्यूट की जगह पे सीधा ऐसा बना के उसी के अंदर कार डाल दूँ मैं, तो कैसे चलेगा? ओके, हाउ विल दैट वर्क? सो फॉर दैट यू हैव समथिंग नोन एज कंस्ट्रक्टर्स. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर्स? ओके, अब देखो यार, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है ना, whenever you define a particular class, okay, whenever you define a particular object, एक क्लास का इंस्टेंस जब भी आप बनाते हो, अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी होती है उसके अंदर, दैट टाइम यू यूज़ समथिंग नोन एज कंस्ट्रक्टर्स. आर यू गाइस क्लियर? Are you guys clear? Please tell me in the chat, yes or no. क्या बोलते हो उसको? Whenever you want to define a particular object of a class and you want to give all the values by default, that time you build something known as constructors. Okay, चलो कंस्ट्रक्टर का थोड़ा आगे पीछे का जियोग्राफी समझते हैं. A constructor in C++ is a special method which is automatically called when an object of a class is created. To create a constructor, use the same name as class.
followed by parenthesis. Okay, same name as class followed by parenthesis. ठीक है, जैसे इसके अंदर था माई क्लास, माई क्लास के अंदर उसने माई क्लास डाल के खट करके डाल दिया, कोई इसके आगे मतलब कोई void int कुछ भी नहीं है. देखो इसके आगे कुछ void int कुछ नहीं है, ये फंक्शन है. सो लेट्स जस्ट गो एंड सी एक एट्रीब्यूट्स वाले फंक्शन के अंदर कैसे होता है. सो आई हैव गॉट, अरे वाह ईयर ब्रांड मॉडल इसने भी टेक्निकली मैंने कॉपी किया इससे. ठीक है, फाइन, नो वरीज. सो कार string XYZ brand model year XYZ. ठीक है, so this is how you can actually create your basic constructor with parameters. You can construct a constructor with parameters, without parameters also. It is totally based upon you. If you have two constructors का thing, one with parameters, one without parameters, C++ will automatically take it into the consideration and work. Okay, अगर आपके पास दो कंस्ट्रक्टर है तो ऑटोमेटिकली वो देख लेगा कि भाई किस में पैरामीटर्स है, किस में नहीं है, और वो अपने आप से काम करेगा. सो योर होमवर्क टुडे इज कि जस्ट चेक आउट हाउ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स कैन वर्क इन वन पर्टिकुलर program itself, one particular C++ itself. Okay, so let's just go and create apna constructor which is car. Okay, car के अंदर क्या था यार, पहले तो int m. Okay, so then उसके बाद string n brand, string brand. Okay, what do you do? Model equal to m. Okay, name equal to n, brand equal to b. हो गया, इज्जत से हो गया ये भी. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट क्या था, सेट ऑल डिटेल्स की जगह पे मैं सीधा जाऊँगा और मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी. ठीक है, हाँ देखो अभी क्या हो गया, अचानक से दिस इज स्टार्टेड गिविंग नो मैचिंग कंस्ट्रक्टर फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ कार. मैं क्या करूँगा, सिंपल जाऊँगा यहाँ पे वापस, और नहीं वो तो होमवर्क है ना तुम्हारा, मुझे नहीं करना है. ठीक है, सो आई हैव टू जस्ट गो हियर एंड डू व्हाट यू नो. आई जस्ट हैव टू डू वन सिंगल थिंग, दैट इज़ माई कार 2021 Nissan MAG मैग्नेट. ठीक है, ये सेट डिटेल वाले का कुछ ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, 2022 महिंद्रा THR थार, यहाँ M कैपिटल, यहाँ N कैपिटल, यहाँ पे M कैपिटल. थोड़ा ग्रामेटिकल ना ठीक होनी चाहिए सारी चीज़ें. डन. वॉज दैट सेट वाला चीज़ अच्छा है कि ये चीज़ अच्छा है? नाउ यू टेल मी दैट इन द चैट. आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है ना. नहीं सब सही है. चलो डन करो, देखते क्या हो रहा है. सो यू आर सीइंग ऑटोमेटिकली नाउ एवरीथिंग इज वर्क. हाँ, थोड़ा कुछ अदल बदल हो गया है. ठीक है, सो नेम है ना, तो पहले नेम मैग्नेट जाएगा, बाद में निशान आएगा. सेम ठीक है. सो दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड. शेयर द लिंक ऑफ द रिपलेट. I'll 1000% शेयर, डोंट वरी. सो ठीक है, ये हो गया, क्लियर है, डन. ब्रांड महिंद्रा, ब्रांड माही अपडेटेड वन. ओके, क्लियर. चलो done. So this is known as a constructor. If you don't want to have a parameterized constructor, no problem bro, you can have this also. For example, तुम कार my car 3 ऐसा बना देते हो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा. देखो जब तक नहीं क्या वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं था तुम्हारे पास. ठीक है, मतलब वो empty constructor. See, until unless you were not having an empty constructor, see out, end L,
this is default structor constructor, ठीक है, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अभी देखो क्या हो रहा है. सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट 3 बनाओगे तो एक प्रिंट होगा दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद बाकी सब कॉल हो जाएगा. ठीक है, आर यू गाइस क्लियर अबाउट इट. सो बेसिकली यू आर नॉट प्रिंटिंग, योर प्रिंटिंग इज स्टार्टिंग हियर. ये तुम पहले कर रहे हो. ओके, जैसे ही तुमने एम्प्टी वाला किया, ओके, सो माई कार वाला एम्प्टी तुम्हारा आ गया. सो यू कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स फॉर अ सेम क्लास. क्लियर, एक और डिस्कवरी हो गया आज. ठीक है, यू कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, यू कैन हैव वन कंस्ट्रक्टर, यू कैन हैव सेकंड कंस्ट्रक्टर. ओके, नाउ शुड आई स्टॉप हियर और शुड आई गो ऑन. वैसे यार 8:85 हो रहा है. मैं बोला कितना, आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं लिया तुमने. देखो कल तुम्हें पढ़ना है टेक्निकली एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, एनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे. एनकैप्सुलेशन क्या होता है बेसिकली, सेटर गेटर, ठीक है. दैट इज एनकैप्सुलेशन इज नथिंग जस्ट बट एक्सेस स्पेसिफायर का ही ज्ञान थोड़ा सा. इनहेरिटेंस पढ़ना है, ठीक है. डिराइव्ड क्लास, बेस क्लास, देयर आर 3-4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. लाइक मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कॉन्सेप्ट, बट आई नो वन इज़ लाइक सिंगल पैरेंट इनहेरिटेंस, मल्टी पैरेंट इनहेरिटेंस. मल्टी पैरेंट इनहेरिटेंस में लाइक ABC है. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, एंड दीज आर द 2 मेजर थिंग्स ऑफ इन. हाँ शिट यार, यहाँ लिखा है ना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ तुमको. ठीक है, इनहेरिटेंस में है ना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस. सी दैट्स व्हाट. देन पॉलीमॉर्फिज्म. That's it, bro. We just have to finish this. If we are done with this, that's it. Your C++. ठीक है. So I think तुम ना सब सीख लोगे. मैं कल तक पूरा C++ के बाप बन जाओगे तुम लोग. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तुमको. टुमारो कैंडी क्रश साइड में रखो, पहले C++ ख़त्म करो, गेट C++ डन, फिर जाके तुम बोलो कि भाई बताओ मुझे C++ साला कोई भी क्वेश्चन. सॉरी फॉर माई लैंग्वेज. मुझे बताओ कोई भी क्वेश्चन C++ का. आई एम गोना नेल इट डाउन. ओके, सो इट विल बी लाइक दैट. सो टुडेज होमवर्क फॉर यू ऑल इज़ टू जस्ट डू व्हाट आई हैव डन टुडे. मैंने जो आज बनाया है इसको बस तुम्हें घर पे बनाना है एक बार. ओके, एग्री. Multi-parent is not possible. You are right. Multi-parent is not possible. I agree. That is, I agree to that. Okay, so I remember my, you know what, guys? I have learnt C++ in my 11th and 12th standard. My teacher was Kapil Sehgal sir. Sir Kapil Sehgal. He has taught me C++ in such a nice manner. I think it's been now 8 years or 7 years I studied from him, and still I remember my C++ concept like rock solid. You want me to do printing wala problems, that is basically logic, but you can ask me anything from it and I still remember it. He taught me in such a nice manner. So whenever I teach someone, I take his approach, that is ki simplified in such a manner that रात के 2 बजे भी उठा के पूछो ना तुम्हें पता चले. So hats off to him, the way how he taught me. I'm just trying to teach you all. Okay, all the people who are saying कि सर कोड दे दो, कोड नहीं दे रहा मैं, खुद से करो. ठीक है, आई एम नॉट गिविंग यू एनी कोड. वाई आई एम नॉट गिविंग यू एनी कोड? सिंपल है, बहुत सिंपल है. ठीक है, आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस. ओके, आई वॉन्ट यू ऑल गाइस टू, आई कैन जस्ट डाउनलोड द कोड राइट नाउ एंड आई कैन गिव यू. मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट मुझे है कि तुम ना जाओ. मैं डाउनलोड करके भी रखता हूँ. ठीक है, चलो मैं डाउनलोड करके भी रखता हूँ, बट आई वॉन्ट यू ऑल गाइस टू फर्स्ट डू इट बाई योर सेल्फ. ओके, देन आई विल गिव यू. Love you all for attending my class. I hope that tomorrow also you guys will attend the class. It's again at 8 p.m. Sorry that I'm stretching this class, but I'm loving to teach C++. मुझे इतना मज़ा कभी नहीं आया पढ़ाते हुए जितना मुझे तुम सबको पढ़ाते हुए आ रहा है. First time in my life, I think I'm having so less in my any class, live class, so less audience in my live class. But yeah, so I hope that
you guys are liking it. Now, sir, I am college student. What part-time job can a student do while studying? First and foremost thing, I want to answer only one thing. Hey, I have an internship opportunity for all the people who want to work. मैं तो खुद का ही इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ना प्रमोट करूँ. ठीक है, रुको देखो. So, hey, all the people who want tech internship in LetsUpgrade community, you can contribute to LetsUpgrade apps which are used by 3 lakh plus people every month. We have 2 internship opportunities. One is front-end track, second is back-end track. For front-end, you need to have HTML, CSS and JS. You should also have React as a necessary component. Next.js is a good to have. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे. We will teach you. Back-end track के अंदर ना JavaScript और DBMS है. Okay, JavaScript and DBMS is must. If you know these 2 things, then only apply. One more thing which you should know is Node.js. Good to have is MongoDB. अगर MongoDB नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम लोग सिखा देंगे. Now, process of hiring is very simple. This is the form. Okay, luc.to/hiring. This is the form. ये फॉर्म ओपन करो. ठीक है, ये 2 महीने का इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, इसमें अप्लाई करो. कंप्लीट, यू विल बी प्रोवाइडेड अ हायरिंग चैलेंज. आपको हमारा HR व्हाट्सएप करेगा एंड करेगी एंड शी विल असाइन यू अ हायरिंग चैलेंज. वंस द हायरिंग चैलेंज इज कंप्लीट, इफ़ यू स्कोर गुड, you get 5,000 rupees का stipend for 2 months. If you don't score good, don't worry. If you want to learn, so you get a unpaid internship for 2 months. ठीक है, 2 महीने के लिए अनपेड इंटर्नशिप मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सब मिलेगा. बट अगर तुमने अच्छा स्कोर किया तो तुम्हें 5,000 का स्टाइपेंड मिलेगा और क्या बोलते हैं, यू विल गेट अ 5,000 का स्टाइपेंड फॉर 2 months. ओह शिट, क्लियर? कहाँ गया यार? हाँ. Now, if you are, then 4th step is you will be asked to complete a basic project, a primary project, a basic project in 60 days. That is 2 months. 2 months के अंदर एक basic project ख़त्म करो, ये बोला जाएगा. If you are going to, you can complete the same project in 20 दिन के अंदर में. You can complete the same project in 20 days. इतना कोई rocket science नहीं है वो. You complete the project in 20 days, आपको you will automatically get a 15,000 per month का stipend. Okay, ये बस क्रैक करो, इंटरव्यू दो. हाँ, once initial project is done, you will get interviewed by tech team leads from LetsUpgrade. Once cleared the interview round, you will start earning 15,000 rupees per month in internship. So you will have documentations also as a proper internship. You will start earning also 5,000 रुपये while you are doing the test project. If you have scored good, if you have not scored good, you can still learn and build the test project. You will get certificate. If certificate and all is, then you will get an opportunity once you build the test project. Maximum time is 60 days. 20 days के अंदर भी बना लोगे. जैसे ही बना लोगे, इंटरव्यू होगा and interview होने के बाद you will just get once if you qualify 15,000 rupees per month is just clear cut stipend for the internship. Why you should be a part of this? If you are a student, you will get exposure to all the latest technology frameworks which are used for web app development, that is MERN stack. Understand how a real life project you can build with collaborating with teams. Earn 15,000 rupees per month as an intern working 5 hours a day, and that to 24 days, 24 or 25 days a month. Okay, now if you are a working professional, you can get exposure to again MERN stack for any kind of career switch you want to do in your life. This will be helpful. Handle high traffic applications that you develop in this whole internship which you will be doing. If you are a graduate fresher, you will learn how to work in a startup team. Second, you will, if you are qualifying the starter project, you will get a 4.5 lakh per annum ka package, direct package.
ओके बस आपको क्वालिफाई करना है, बेसिक प्रोजेक्ट बनाओ और अपना क्वालिफाई करो इंटरव्यू, यू विल गेट अ 4.5 LPA सीधा सीधा. परफॉर्म गुड, गेट प्लेस्ड एट अ गुड पैकेज इन लेट्स अपग्रेड टेक टीम. सो अप्लाई नाउ, दिस इज द लिंक luc.to/hiring. गूगल फॉर्म है, जाओ फटाफट से भरो. आई होप यू आर क्लियर. Just this is something which will be released for the entire people on यहाँ पे letsupgrade.in का जो Instagram है. If you have still not followed it, just go follow it, because we keep on posting tons of things like, see, self-taught coder कैसे Zerodha का CTO बन गया. Okay, he's Kailash Nath. So how Kailash Nath became CTO of Zerodha, ये स्टोरी. ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं यहाँ पे. how to do networking like a pro developer. People say that कि यार you have done a very good information and all. So this is the checklist. जैसे chat GPT है तो इसका क्या मतलब है. So you can just go and follow this all content that we create. जिस Zomato का CTO है, so how this is being done. So basically just go follow Let's Upgrade Instagram and you will get to know all the things that we are doing. Okay, so I hope that I'm clear. So if you want to apply for the job opportunity, tomorrow it will be posted here on the Instagram also. In the meantime, if you want to apply, this is the link, luc.to/hiring. Apply early so that you get early exams and you crack exams and you can take it ahead. Okay, so do it fast guys, and you'll be working with me and the whole tech team at Let's Upgrade closely. Okay, so love you all. Thanks a lot for asking that opportunity wala question. So that's it. So this is what I have got for you all, and let's take it to the next level. Okay, bye bye, take care, have a nice day. कहाँ गया यार, OBS नहीं दिख रहा. हाँ, so thank you everyone for joining in. So I hope that I have answered all your things properly. Let's meet tomorrow again 8 PM, and I'm super excited to teach you all the आगे का part. And Candy Crush तो बना ही लेंगे, कुछ बड़ी rocket science नहीं है उसमें. ठीक है, चलो bye bye, take care, have a nice day. Okay, चलो, and spread this internship opportunity in your entire college का gang so that they can also start applying. Okay, bye bye, love you all, take care.